Assalamu alaikum everyone. You are tuned into E.Fatima Academy. This is another exciting episode of Educatify with Ali Raza. Keep watching. Welcome back to the show, ladies and gentlemen. Today we have someone very special with us, joining us all the way from Lahore. The name of that special guest is Dr. Amara Latif. She is basically a cosmetic dental surgeon and a motivational speaker. She aspires and continues to spread smile, positivity, and optimism all around the world. Along with that, she has a lot to share with us about her life, about her passions, about her aspirations, and her overall journey is quite inspirational, and the work that she's doing is versatile. I mean, she's not just in the medical field in dentistry, but she's doing other welfare things. So without any further ado, let's just move into the conversation and welcome our guest, Dr. Amara Latif. Thank you so much, Doctor, for joining in. It's a pleasure having you. Welcome to the show. Thank you, Ali. Thank you for having me here. It's a pleasure being here with you and sharing the space with you. Yeah, it's a pleasure being with you, definitely. So, as I told you guys, that she is basically from the dentistry, she's associated with dentistry from quite a long time. तो आज हम जिन चीज़ों पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं, और जैसा कि आपको पता है कि E.Fatima Academy आपके लिए इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते हैं, तो आज हम बातें करेंगे स्माइल एंड लाफ्टर के बारे में, जिसमें हमारे ऑफ कोर्स डेंटिस्ट्री इन्वॉल्व है, आपके एवरीथिंग इज देयर. सो मेरे पास कुछ बहुत ही अच्छे सवाल यहाँ पे मौजूद हैं जिससे हम अपने गेस्ट को ट्रिक आउट करेंगे और देखेंगे, और लेट्स टेस्ट आउट हर इंटेलिजेंस एंड हर IQ. तो डॉक्टर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जब आप सुनती हैं ये टर्म इम्प्रूविंग योर स्माइल, तो सबसे पहली आपके दिमाग में क्या चीज आती है कि हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर स्माइल्स? व्हाट आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स वी कैन डू? ओवर टू यू मैम. थैंक यू. आपका सवाल दो मानी रखता है. एक, स्माइल हमेशा अपेरेंट हमारी स्माइल है, बट एज दे से ब्यूटी लाइज विद इन अस. सो व्हेनेवर वी आर स्माइलिंग फ्रॉम द हार्ट, definitely it is going to get conveyed and spread or much more positivity and better results. But then there is something else that is apparently how it is. Both the things are equally important. The aesthetic looks as well as the feeling and the pure thing behind it. Since at the moment I am here as a dentist, so I am going to tackle this part, that is aesthetically how you can improve your smile. Our face ये हमारी पर्सनैलिटी का एक आईना होता है. चेहरा आपकी शख्सियत का आईनादार है, और चेहरे के ऊपर दो ऐसी चीज़ें हैं अल्लाह ताला की दी हुई जो बग़ैर कुछ कहे, बग़ैर कुछ बताए आपकी शख्सियत का पोल खोल के रख देती हैं. आपकी आंखें और आपकी स्माइल. आप एक नज़र में देखते ही बता सकते हैं कि ये तंज़िया स्माइल आ रही है या ये दिल से एक खुशी वाली स्माइल आ रही है. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आपका बहुत खूबसूरत चेहरा भी है, लेकिन उस स्माइल में मौजूद जो दांत नज़र आते हैं उनकी प्रॉपर हिफाजत नहीं की गई, तो इट्स गोइंग टू रुइन एवरीथिंग. सो फॉर दैट ब्यूटी, इनर एंड आउटर, वी नीड टू टैकल everything that is associated with it. Yes, that was very, yeah, thank you. That was very well said. Thank you so much, Doctor, for elaborating so beautifully. And I hope कि audience को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. आपसे जो दूसरा सवाल है वो मतलब आपके लिए I don't know, maybe easy हो, maybe नहीं हो. कोई आम बंदा जिसके जो है जो ओरल है, जो उसके दांत हैं वो ठीक है, मतलब नॉर्मल हैं, जिससे अच्छे बंदे के होते हैं, मतलब उसके पास he or she has no disease, he or she is perfectly normal, having perfect teeth, उनके लिए आप कौन सा टूथब्रश और टूथपेस्ट सजेस्ट करेंगी?
I'm not very used to this medical terminology, तो मैं आपसे थोड़ा सा easy terminology में बात करूँगा. कौन सा आप tooth paste suggest करती हैं उन बंदों को जिनके already अच्छे दांत हैं and they are normal people with no diseases? Let me rephrase it for you ताकि सब लोगों को समझ आ जाए. What Ali exactly want to ask is कि without any problem, regular आम जिंदगी में कौन सा टूथपेस्ट मैं आप सबको प्रिस्क्राइब करूँगी. इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एलेबरेट करूँगी ताकि ये कंसेप्ट समझ आ जाए कि इट्स नॉट द टूथपेस्ट, इट्स योर टेक्निक. छोटी सी मैं एग्जांपल देती हूँ हमेशा अपने पेशेंट्स को भी समझाने के लिए कि आपने बर्तन धोने हैं अपने बावर्ची खाने में. मैं आपको मैक्स पकड़ा दूँ या रिन पकड़ा दूँ या कोई भी आम सोप पकड़ा दूँ, जिस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा वो ये है कि आपके हाथ से आप कितनी अच्छी तरह से अपना स्कॉच ब्राइट या अपनी कूची को बर्तन के अंदर घुमाते हैं और अंदर बाहर से साफ़ करते हैं. आई होप कि ये वाली एग्जाम्पल एकदम माइंड का बल्ब जला देगी. इट्स सेम विद द टूथपेस्ट. आप देखेंगे, यू जस्ट स्विच ऑन द टेलीविजन, एवरी ब्रांड इज़ जस्ट देयर ब्रैगिंग अबाउट देयर थिंग दैट माइन इज़ बेस्ट, माइन इज़ बेस्ट. नो मैटर अगर मैं आपको एक जादुई टूथपेस्ट भी दे दूँ एंड आई टेल यू कि इसको बस अप्लाई करो और सारी की सारी आपकी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी, इवन देन आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते अगर आपको प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक नहीं आती. डायलेमा इज़ कि हम बचपन से ही अपने बच्चों को टूथब्रश पकड़ा देते हैं बिकॉज वी बिलीव कि शायद अल्लाह की तरफ से इनको कुछ वही नाजिल हुई है और इन्हें पता है कि कैसे दांत ब्रश करते हैं. ना हमारे पेरेंट्स को पता था, ना आगे से नेक्स्ट जनरेशन को पता है कि व्हाट इज़ द प्रॉपर वे टू डू इट. एंड इट्स वेरी इजी टू लर्न इट. हम YouTube पे बैठ के इंटरटेनमेंट ड्रामाज हर चीज़ देखते हैं. इट विल टेक जस्ट 2 minutes. आप लगाएं हाउ टू ब्रश द टीथ एंड जस्ट वॉच इट क्लोजली. यहाँ ऑडियंस के लिए चूँकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए है कि वी हैव दिस बिलीव, हम रोज़ अपने आप को ये एश्योर करवा के सोते हैं कि मैं बहुत अच्छे दांत साफ़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ. But since my technique is not good, it's useless. It's not giving me the benefit that I need. So all the efforts are going in waste, right? So when I am putting in my efforts, I am टूथपेस्ट के ऊपर मैं पैसे लगा रही हूँ, मैं डेली फिर मैं अपने आप को इश्योर कर रही हूँ कि आई एम डूइंग समथिंग गुड फॉर माई सेल्फ, तो फिर उसका फ़ायदा भी आना चाहिए. तो हेयर वी नीड टू एक्ट स्मार्ट, फर्स्ट लर्न द टेक्निक एंड दैट्स इसी के बारे में सारा मेरा चैनल भी है यूट्यूब पे कि ये आपको बहुत छोटी छोटी टिप्स, ट्रिक्स और बेसिक चीज़ें सिखाता है. बिकॉज बहुत देखो ये बहुत छोटी चीज़ है ना, लेकिन हमें नहीं पता, बहुत सौ को नहीं पता. यही मेरा मकसद है कि आप बहुत छोटी चीज़ों को सीखें जिनका बेनिफिट बहुत बड़ा है. सो सिंपल, लेकिन एक टिप दे दूंगी सबको कि जब भी आप टूथ ब्रश करते हैं तो एक तो ब्रश को आपने 45 के एंगल पे पकड़ना है. आपने ऐसे बट जॉइंट रख के, आई वॉज हैविंग द ब्रश हेयर 1 minute, ओ माई सन हैज़ टेकन इट हेयर, दिस इज द टूथ ब्रश, राइट. आप जब भी टीथ ब्रश करते हैं यू जस्ट पुट इट लाइक राइट एंगल पे. वी आर नॉट गोइंग टू पुट इट ऑन राइट एंगल. जस्ट इमेजिन दिस इज द टूथ सरफेस एंड ये गम्स हैं. आपने गम्स और टूथ के ऊपर 45 के एंगल पे ब्रश रख के टू एंड फ्रो एंड डाउन, टू एंड फ्रो एंड डाउन 3-4 टाइम एंड देन सर्कुलर मूवमेंट्स. व्हाट विल इट डू? गम्स के अंदर निचली साइड पे और दांत के जंक्शन में भी खाना फंसा होता है और वही बैक्टीरियाज की भी सबसे फेवरेट प्लेस है टू हाइड. वहीं पे उनको फूड मिल जाता है, सो दे पार्टी ऑल नाइट. सो व्हाट वी हैव टू डू कि हमें उनकी पार्टी से केटरिंग सर्विसेज को पीछे कर लेना है, फूड वहाँ से रिमूव कर देना है. जस्ट फॉलोइंग दिस वन टिप रेगुलरली, it's going to make a huge difference. So toothpaste is not important, your technique is important. Wow, I mean, thank you so much for enlightening us with this very informative point that you highlighted, because I have seen and I have heard a lot of dentists कि वो कहते हैं कि आप Sensodyne यूज करें, वो सबसे बेस्ट है, और
कोलगेट है मार्केट में, तो वो बेसिकली अब क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद डेंटिस्ट इस चीज को एंडोर्स कर रहे हैं. दे आर नॉट डूइंग इट फॉर द पेशेंट, दे आर बेसिकली डूइंग इट. या दे से 10 में से 9 डॉक्टर सेंसोरिन रिकमेंड करते हैं. मैं वो 10वां डॉक्टर हूँ. हिलेरियस. वाओ. तो हाँ, मतलब which means कि वो endorsement हो रही होती है. That's basically not about the patient, it's all about the brand itself. और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो टूथ पेस्ट है वो सेकेंडरी चीज है, पहले जो प्राइमरी चीज है वो ये है कि how we apply it. So very well said and very well elaborated. Thank you so much for articulating it so well. मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई एम श्योर कि क्योंकि आप इस चीज से वाबस्ता हैं बहुत अरसे से, आपको पता होगा ऐसे कौन से हम रेजिमीज यूज कर सकते हैं अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, जो मतलब इजीली घर पे हो सकें. कुछ ऐसी रेजिमीज रिजीम्स जो नेचुरल हों और जिनसे कोई हमें नुकसान भी ना हो, अगर फायदा ना हो तो ऑफ कोर्स नुकसान भी ना हो. तो वो ऐसी ऑथेंटिक चीजें कौन सी हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं टू मेंटेन आवर ओरल हाइजीन? ओवर टू यू डॉक्टर. थैंक यू. सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एक जो कॉम्प्रिहेंसिव ओरल केयर है, इट्स नॉट ओनली टूथ ब्रशिंग. It includes actually four things. The fourth one is additional one. First is toothbrushing. Second is flossing. Third is use of mouthwash. And the fourth one is regular visit to your dentist. That is at least once in a year, you should visit your dentist. This is a comprehensive plan. If you start following it बिल्कुल अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई सालों से, तो दांत जो अल्लाह ताला ने हमारे डिज़ाइन किए हुए हैं, if I am 80 years of age, I should be having this set of teeth. I don't need any crowns, bridges, implants, anything. But since हम इनकी proper care नहीं करते, that's why we need to go for other treatments. होम बेस्ड केयर में मिसवाक इज़ इक्वली इफ़ेक्टिव, बट मिसवाक का भी अगेन आपको यूज़ आना चाहिए. जिस तरह से मैंने बताया था कि हम बहुत सारे स्कूल्स में सर्विस करते रहे हैं. हम लोगों ने जब मदरसों में और दीनी मराकज़ में विज़िट किया और उनको एजुकेट करने के लिए गए, तो वहाँ पे ज़्यादातर इनफैक्ट एवरीवन यूजेस मिसवाक, लेकिन मिसवाक यूज़ करते हुए वो हमेशा दांत के बाहर वाली साइड को रगड़ रहे होते हैं और मुंह के अंदरूनी हिस्से में दांतों की अंदर वाली साइड्स को कभी साफ़ नहीं करते, और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है. जब आपने सफाई जिस भी करें, लेकिन अंदर बाहर से दांतों के तमाम हिस्सों को साफ़ करें. तरीका अगर आपका ठीक होगा तो मिसवाक इज़ इक्वली इफेक्टिव एज वेल. सेकेंड थिंग इज़ फ्लॉस. अच्छा, दांत साफ करने का ना यहाँ पे अली मैं खुद ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट आई एम्फेसाइज एवरीवेयर. इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं 2x2. उर्दू में मैंने इसका एक बनाया हुआ है ताकि सबको सुनते ही इधर बैठ जाए, 2/2. तो आपने 2/2 का फार्मूला इस्तेमाल करना है अपनी ओरल हेल्थ केयर के लिए. आई एश्योर यू कि अगर आप सिर्फ यही कर लें अलॉन्ग विथ फ्लॉस, आपकी 80% प्रॉब्लम्स एलिमिनेट हो जाएंगी, चाहे वो कीरीज की हैं चाहे वो गम्स की हैं. मैं यहाँ पे एश्योर करवा रही हूँ इस चीज़ को. ऑल यू हैव टू डू कि आप मुझे एश्योर करवा दें कि यस आप 2/2 का रूल फॉलो कर रहे हैं. 2/2 का रूल क्या है? 2 दफ़ा दांत साफ करने हैं और 2-2 मिनट के लिए दांत साफ करने हैं रात को सोने से पहले. लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है कि आप घड़ी के 2 मिनट इस्तेमाल करें. आपकी जो परसेप्शन के 2 मिनट्स हैं वो नहीं होने चाहिए, बिकॉज स्टडीज़ हैव शोन कि जो 45 सेकेंड हैं इन योर माइंड यू बिलीव 2 मिनट्स पूरे हो गए. तो पुट अ स्टॉप वॉच, मोबाइल का वॉच और योर क्लॉक, एंड देन सी दैट यू आर ब्रशिंग फॉर प्रॉपर 2 मिनट्स. इसके पीछे क्या साइंस है? साइंस ये है कि 2 मिनट से पहले फ्लोराइड भी आपके दांतों में अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता. फ्लोराइड इज़ द थिंग जो आपके दांतों को केरीज से बचाता है और स्ट्रॉन्ग करता है. सो एटलीस्ट गिव 2 मिनट्स ताकि फ्लोराइड अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए. प्लस इट्स एन एवरेज टाइम जो सब सर्फेसिस को साफ करने में लगता है.
देन माउथ वॉश भी आपने घर में पूछा है कि घर की रेमेडीज, दो बहुत सिंपल जो हर कोई कर सकता है वो चीज़ें हैं माउथ वॉश के लिए। नीम गर्म पानी में नमक डाल के आप कुल्लियाँ कीजिए, इट इज़ वेरी गुड। सेकेंड थिंग, नीम के पत्ते पानी में उबाल लें और उनसे कुल्लियाँ करें, तो वो भी बहुत अच्छा माउथ वॉश है। Wow, Last thank you thing. so much. Gigi, you want to Yeah, continue? Please proceed. visit your dentist every year. Yeah, that's absolutely right. तो मैं फिर से precisely summarize कर दूं जो डॉक्टर ने कहा। उन्होंने पहले क्योंकि brushing लोग समझते हैं कि the only thing that you can do for your teeth is to brush them, but आज कितना ये ज़रूरी सेशन था because she has given us a broader perspective of taking care of your teeth, of your oral scenario. तो brushing, not only just brushing is important, but along with that, flossing and mouthwash, and also visiting your dentist at least once a year. So thank you so much, doctor, for enlightening and for sharing such a valuable information with us. I'm sure कि हमारे वो audience जिन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, now they are well aware of it and they will take care of themselves. Moving on, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि how can we, मतलब this is a very well perceived and very conventionally asked question. लोग पूछते हैं कि how can we keep our teeth white teeth कैसे कैसे result क्या हम use करें जिसका result white teeth हों, and we can achieve that kind of desired effect which we want, ताकि हम हंसें तो दूर से मतलब चमक नजर आए लोगों को. So what are the secrets to it? आज तो हमने सही बंदा पकड़ लिया है. So over to you, doctor. Thank you. अली, इसमें टीथ वाइटनिंग के लिए दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सिचुएशन है कि दांत आपके हमेशा से अच्छे थे, वाइट थे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द यूज़ ऑफ कॉफ़ी, टीज, एंड देयर आर लॉट ऑफ डाइज इन फूड, स्पेशली द स्वीट्स वी आर गेटिंग, even in our zarda thing, everything, it's containing lot of dyes, colors in them, and that stay on our tooth. Important is that after eating, 30 minutes after you're eating, brush your teeth. If you're at a place or at a spot where you cannot brush your teeth, at least rinse with water. Continuously consumptions हो रही होती हैं कोक्स की, टॉफ़ी, स्वीट, बेवरेज, इवन आवर केक्स, मतलब हर खुशी में हम मीठा खाते हैं. हम पाकिस्तानियों का एक वो सीन है कि हर खुशी के मौके पे हमने मिठाई खानी होती है. तो आप किसी भी मिठाई को ले लो, उसके अंदर कलरिंग्स होती हैं और वो सब इफ़ेक्ट करती हैं. तो एक तो अगर आप इस चीज़ को अपना लें कि आप जब भी कुछ खा रहे हैं, विद इन 30 मिनट्स आप अच्छी तरह से कुल्ली कर लें, एंड लेटर ऑन व्हेन मतलब आपको टाइम मिलता है फिर आप ब्रशिंग करें. तो एक तो ये इस चीज़ को काफ़ी अवॉइड कर सकता है. इसमें एक टिप दे देती हूँ, हफ्ते में एक दफ़ा आप जो है अपने टूथपेस्ट के अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिक्स करके अच्छी तरह से टीथ ब्रश कर लें, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहती हूँ, अगेन वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आजकल हमें मार्केट या बाज़ार में बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट नज़र आने शुरू हो गए हैं जो स्पेसिफिकली वाइटनिंग के लिए हैं. ये वाइटनिंग टूथपेस्ट जो हैं, इसमें कुछ स्मोकर्स के लिए स्पेशली होते हैं, क्योंकि स्मोकर्स में दांत के ऊपर निकोटीन के डिपॉजिट आ जाते हैं, जिसकी वजह से दांतों पे काफ़ी गंदे स्टेन्स होते हैं. तो उनके टूथपेस्ट में हमेशा बहुत से अब्रेसिव चीज़ें या अब्रेसिव केमिकल्स होते हैं जो दांत की ऊपरी सतह को रगड़ देते हैं और दांत का शाइन को ख़त्म कर देते हैं. सो नेवर 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 यूज़ एनी ब्लीचिंग एजेंट or any bleaching toothpaste available in the market. I have this service that is again हमारे पूरे पाकिस्तान में सबके लिए है, and that is कि anyone can get second opinion or consultation free of charge if they contact me on my Insta or on my Smile Bright, that is my page. They'll get free consultation. सखर के अंदरून
कुछ गांव से लड़कियों ने मुझे कॉल किया, 3-4 थी, उन्होंने इकट्ठे शहर जाके सखर शहर से, मैं ब्रांड नेम नहीं लूँगी, दे बॉट अ वाइटनिंग टूथपेस्ट दैट इज़ वेरी फेमस और आजकल हमें हर मॉल के एजल पे मौजूद मिल रहा है वो. They used it for 2 months and now they had developed severe sensitivity in teeth. उनके एरिया में कोई डेंटिस्ट भी नहीं है, they cannot go. When they consulted me, I took the history. Eventually it came out कि toothpaste that claimed कि वो whitening करता है, actually it had abrasive things in it. अब्रेसिव का यही था कि वो दांत की ऊपरी सतह रगड़ी कुछ वो बहुत विग्रियसली और पैशनेट हो के दांतों को रगड़ रही थी कि वो वाइट हो जाए, लेकिन उससे हुआ ये कि दांत की प्रोटेक्टिव लेयर उतर गई और उनको स्वेयर सेंसिटिविटी के इश्यूज आने शुरू हो गए. सो आई विल सबको वार्न करूँगी, आजकल चाइना बेस्ड 2-3 बहुत प्रोडक्ट्स मार्केट में फेमस हुई हैं कि आप होम बेस्ड ब्लीचिंग कर लें. Bleaching is a very sensitive procedure and it should only be done a qualified dentist who is experienced to do this procedure with proper care in the clinic. Other than that, even there is a home-based bleaching thing that dentists give you. That is fine. Other than that, every kind of bleaching stuff that is being advertised and available in market, it's not good in long run. सेकेंड थिंग होती है कि आपके दांत शुरू से ही वाइट नहीं थे, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. मैं थोड़ा सा एलेबरेट करूंगी क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा साइंटिफिक अगर पार्ट हो गया, हैवी डोज हो गई तो लोगों को समझ में नहीं आएगी. लेकिन टेट्रासाइक्लिन्स एक एंटीबायोटिक्स है. प्रेगनेंसी में अगर मदर उसको यूज़ कर लेती है तो बच्चे के दांतों में वो डिपॉजिट जाती है और जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत येलो टू ग्रे डिस्कलरेशन लिए होते हैं. सेम अगर 3-4 साल के बच्चे को टेट्रासाइक्लिन किसी भी स्टेज पे फॉर फीवर या इन्फेक्ट है, बहुत अच्छी एंटीबायोटिक, लेकिन आपने डेवलपमेंट ईयर्स में नहीं देनी है क्योंकि उस टाइम वो दांत के अंदर डिपॉजिट हो जाती है, फिर नथिंग कैन रिमूव इट अदर देन गेटिंग द विनियर्स और क्राउन्स. आपके सिंध में ख़ास तौर पे जहाँ पे कुओं का पानी इस्तेमाल किया जाता है उसमें फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. इट्स अ कॉमन ऑब्जर्वेशन कि दूर दराज के इलाकों के जो लोग हैं उनके दांतों के ऊपर अक्सर येलो डिस्कलरेशन होती है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट हाई लेवल्स ऑफ फ्लोराइड. फ्लोराइड इज़ एक्सीलेंट थिंग, लेकिन उसकी एक सर्टन अमाउंट है, उससे ज़्यादा जब एक्सीड कर जाता है तो ये हमारी बोन्स को भी वीक करता है और दांतों को भी वीक करता है और दांतों के ऊपर येलो डिस्कलरेशन ले आता है. अगर इस टाइप की कोई डिस्कलरेशंस हैं जो इंट्रिंसिक हैं, दांत के अंदर चली गई हैं या शुरू से हैं, तो उनका ट्रीटमेंट सिर्फ आपका डेंटिस्ट कर सकता है. हाँ, जो स्टेन से या एक्वायर्ड हैं उनको आप अच्छी ओरल हाइजीन से साफ कर सकते हैं. ओवर टू यू. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर. वंस अगेन आपने कितनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमारे साथ शेयर की और मतलब आपने तो एक नई पर्सपेक्टिव दे दिया, कुछ नया ही हमें दे दिया सोचने के लिए. जो हमारे कन्वेंशनल हम सोचते हैं, हमारे जो माइंडसेट्स हैं हमारे ऑरल चीज़ों को लेकर, वो कुछ सही नहीं है और आपने आज कुछ चीज़ें क्लियर की एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने आपको रीच आउट किया. और आपने जो बात की फ्लोराइड की कि वो हमारे टीथ्स के लिए मतलब अच्छी नहीं है, एक्सेसिव उसका यूजेज इज़ नॉट रियली गुड फॉर अस. इट कैन cause awful repercussions. And also you talked about your free consultation. So everyone watching, agar aapko, I'm first of all not convinced is that really free for everyone. I mean, can anyone from anywhere go for it? And if yes, then oh my god, Smile Bright is doing a commendable job. Thank you so much, ma'am, for introducing such a wonderful piece of work, and I think it's a much needed program and everyone should avail it. The link to Dr. Amara's profile and Smile Bright is given in the captions and the description. Go check that out, and if you want any sort of consultation regarding your if you're facing any kind of issues, go for it.
अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली वी हैव 2 questions remaining and then we are going to sign out. ये बहुत important questions and I received these questions from somewhere who messaged, from someone who messaged me. Next question ये है, लोग ये है कि हम उठते ब्रेकफास्ट से पहले तो ब्रश करते हैं, और कुछ लोग जो है वो रात को ब्रश करके भी सो जाते हैं. तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि अगर आप रात को ब्रश करके सो रहे हो तो सुबह आपको ब्रश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रात का आप खाना खाते हो डिनर के बाद वो आपका क्लीन आउट हो जाता है. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये बात सही है? व्हाट इज रियली द राइट टाइम टू ब्रश? इज दैट नाइट और इज दैट मॉर्निंग? एंड द सेकंड क्वेश्चन, बेसिकली दीज आर 2 questions. Second question ये है कि how often should we brush our teeth in a day? So these are basically 2 questions. Over to you, Doc. थैंक यू अली. इस चीज़ का कुछ पार्शल जवाब तो मैं आपको पहले दे चुकी हूँ. दैट इज़ एग्जैक्टली 2/2 कि हमने 2 दफ़ा करने हैं दांत साफ. टाइमिंग्स उनकी, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है, या जो लोग कुछ कहते हैं वो कुछ बिल्कुल ठीक कहते हैं कि अगर आप रात को दांत साफ कर चुके हैं तो सुबह आपका मुंह साफ है, आप बस कुल्ली कीजिए, खाना खाइए, और खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप दोबारा दांत साफ करें ताकि ब्रेकफास्ट के भी सारे पार्टिकल्स मुंह से निकल जाएं. तो दैट इज़ डबल प्रोटेक्शन, राइट? रात को सोने से पहले, सुबह नाश्ते के बाद. अगेन 2/2, 2 मिनट्स के लिए. ये हो गया इस चीज़ का जवाब. अच्छा, अब कुछ लोग बहुत ओवर जीलियस होते हैं एंड दे आर लाइक कि मैं ज़्यादा दांत साफ करूँगा तो मेरे दांत और चमक जाएंगे, एंड दे गो फॉर 3 to 4 times of teeth brushing. But that is dangerous. Dangerous in this sense, our teeth, they have this shiny white layer that is known as enamel. Enamel एक दफ़ा रगड़ा जाए या ख़राब हो जाए तो दांत में सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है. 2 times done effectively is more than enough. उसके बाद आप ये है आफ्टर मील्स आप रिंस कर लें, अच्छी तरह से कुल्ली कर लें, बट मोर देन दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. मोर देन दैट इट कैन हार्म यू. प्लस आप अगर ओवर जीलियस कर रहे हैं तो मसूड़ों को बार बार आप फिजिकली हर्ट कर रहे हैं, जिससे आप अपने मसूड़ों को भी डैमेज कर सकते हैं. तो 2 times इज इनफ. वन थिंग आई विल मेंशन एज वेल अगेन, आपने मुझसे टूथपेस्ट का सवाल किया था. आई वुड हैव बीन हैप्पियर अगर आप मुझसे टूथब्रश का सवाल करते कि टूथब्रश कौन सा यूज़ करना चाहिए. वी गेट दीज टूथब्रशेस with big head, with small heads and so on. कुछ लोगों में लास्ट मोलर्स इतना एंड पे होते हैं कि वो बड़े मुंह का या बड़े सर का जो ब्रश है वो पीछे तक नहीं जाता, तो उन्हें हम एडवाइस करते हैं कि स्मॉल हेड वाला ब्रश यूज़ करें. वन थिंग. सेकेंड थिंग, ब्रशेस कम विद दिस थिंग: सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड. हार्ड ब्रशेज आर ओनली रिकमेंडेड फॉर स्मोकर्स कि जिनके दांत पे हार्ड निकोटीन के स्टेन्स आ जाते हैं एंड दे नीड टू गेट रिड ऑफ इट. आइडियली प्लीज स्टॉप स्मोकिंग. Smoking is not good for health. Smoking is not good for your smile. In both ways, you will give that stinky breathing out plus unsightly teeth. Hard brush is only for smokers. Rest, you should go for soft or medium brush and always use these with light motion and light pressure. आपने दूसरा सवाल एक और मुझसे इसका सेकंड पार्ट किया था, प्लीज उसे जरा रिपीट कर दीजिए. If I'm मैम आपने आंसर कर दिया. वो यही था कि how often should we brush our teeth. So and the first, so both these questions were related to each other. Thank you very much for giving me your precious time. Moving on to the final question. इससे पहले मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि are you somehow associated with dermatology as well, so that we can plan the next session based on skin? Are you a dermat as well? Not a dermatologist. I am not related with that. Cosmetic, let me clear it to you. Of dentistry, that is no doubt associated with the face, and इसमें दोनों चीज़ें आती हैं. कॉस्मेटिक्स ऑफ द टीथ, ठीक है, इसको हम स्माइल मेकओवर कहते हैं. और स्माइल मेकओवर में ना सिर्फ सारे दांतों की रिहेबिलिटेशन या रिहैब किया जाता है,
बल्कि सैगिंग मसल्स, आपके इसमें बटॉक्स आ जाते हैं, आपके मसल्स को लिफ्ट अप करना आ जाता है, फेस के रिंकल्स को रिमूव करना आ जाता है, एक्सरसाइजेस के सेट हैं इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, फिलर्स एंड ऑल दैट फॉल विद इट, यस, बट डर्मेटोलॉजी इन इटसेल्फ इज एन अ डिफरेंट फील्ड that is all about skin. Dermatology, it involves skin of the full body, everywhere, anywhere. Our cosmetic dentistry, it is more related to face, wrinkles, botox, fillers, smile makeovers, ये जो lines आ जाती हैं और aged look आता है, इसको tackle करना and things like that. थैंक यू वेरी मच फॉर क्लियरिंग दिस आउट, क्योंकि आपने यू मेंशन्ड अबाउट ब्लीचिंग ना, तो मैंने समझा शायद आप डर्मेटोलॉजी से भी आपकी शायद एसोसिएशन हो. थैंक यू सो मच. अब दिस इज द फाइनल वन. आपने डाइट की भी बहुत चीज़ें बहुत बार मेंशन किया अपने आंसर्स में. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि वेट लॉस के लिए एक पर्टिकुलर डाइट होती है, कीटो डाइट्स हैं, हर तरह की डाइट्स हैं, यू नो, लो कार्ब डाइट हैं, लो कैलोरी डाइट हैं. मेरा आपसे ये सवाल है कि टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनको पावरफुल बनाने के लिए और उनको बेसिकली लिफ्ट अप करने के लिए कौन सी, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि डाइट का भी इसमें कोई ना कोई कैरेक्टर होगा, किरदार जरूर होगा. व्हाट सॉर्ट ऑफ डाइट डू यू प्रेफर टू एनीवन हु वांट्स टू एनहांस देयर टीथ, हु वांट टू टेक केयर ऑफ देम एंड अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिजीजेस? थैंक यू अली, इट्स बहुत अच्छा और वेल आर्टिकुलेटेड क्वेश्चन है. डाइट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं ये शुरू करूं कि ये कहाँ से शुरू होता है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के 4 मंथ में बच्चा जब माँ के पेट में होता है, तो उस टाइम तक उसके दांतों की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी होती है, यानी बहुत अर्ली स्टेज पे ही दांत बन चुके होते हैं. तो मदर की जो फीड है, माँ की खुराक में कैल्शियम, फॉस्फेट, ओवरऑल जब भी हम विटामिन्स देते हैं, गुड हेल्थ, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, फिर जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद भी उसकी डाइट में कैल्शियम, फ्लोराइड, डिफरेंट, मतलब ओवर, जब भी बच्चा डेवलपमेंट की स्टेज पे स्वेयर कहीं पे बीमार होता है या बहुत उसको हाई टेम्परेचर होता है, तो उस टाइम दांत की डेवलपमेंट की सरफेस के ऊपर एक लाइन सी बन जाती है. जब टूथ इरप्ट होता है तो हम डेंटिस्ट सिर्फ एक नज़र उस दांत को देख के बता देते हैं कि बच्चे की जब इतनी एज थी तो उस टाइम इसको कोई स्वेयर इलनेस हुई थी, क्योंकि वो रिकॉर्ड दांत के अंदर फीड हो जाता है. सो गुड हेल्थ एंड ओवरऑल good diet, it is very important during the development years. जब हम एक दफ़ा दांत बन गया है, ठीक है, तो उसमें हमारा सलाइवा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हमारा सलाइवा कंटिन्यूसली दांतों को कैल्शियम, फॉस्फेट और फ्लोराइड प्रोवाइड करता है. दांत उसको एब्जॉर्ब करते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन उसका सलाइवा का फ्लो अच्छा होना चाहिए. बाजू का डिहाइड्रेशन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से या कुछ और डिजीज़ से एसोसिएट होके सलाइवा बनने का अमल कम हो जाता है, मुंह में थूक कम बनता है, मुंह खुश्क रहता है. ऐसी सूरतों में हमेशा बहुत तेज़ी से दांतों को केरीज लगती हैं या केरीज हो जाती हैं. सलाइवा अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है हमारी गुड डेंटल, ओरल, जुबान की, चीक्स की, हर चीज़ की हेल्थ के लिए. द मोमेंट सलाइवा कम होता है, मुंह में अल्सर्स बनने शुरू हो जाते हैं, ट्रोमेटिक डिफरेंट एरियाज में लीशंस अपीयर होने शुरू हो जाते हैं. तो जब भी किसी को भी लगे कि उनका मुंह सूखा सूखा है, प्लीज़ गेट इन टच विद योर डॉक्टर एंड उसकी रीज़न जानने की कोशिश करें और उसको ट्रीट करें. लास्ट थिंग, आप जब खाना खा रहे हैं तो एट द एंड हमारे यहाँ मीठा खाया जाता है. वो हम अपने आप को तो ट्रीट देते हैं, बैक्टीरिया से भी ट्रीट देते हैं. बट वी डेंटिस्ट रिकमेंड, वी से कि आप एक स्लाइस ऑफ चीज़, चाहे बिल्कुल थोड़ा सा, उसे कंज्यूम कर लें, उसे खा लें. चीज़ इज़ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव फॉर योर टीथ रादर देन सम कार्बोहाइड्रेट. दिस वॉज वट वी शुड टेक. मगर हमारी डेंटिस्ट्री में जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ व्हाट वी शुड नॉट टेक. कार्बोहाइड्रेट्स एंड एसिडिक थिंग्स आर एक्सट्रीमली डेंजरस. आपने कीटो डाइट का जिक्र किया,
कीटो में रोज सुबह उठ के सबसे पहले आपको विनेगर बेस्ड वाटर अपना लेना होता है, जिसको आप कहते हैं कि अपना इलेक्ट्रोलाइट आपने पूरा करना होता है। उसमें थोड़ा सा नमक होता है, आपका काला नमक या हिमालयन साल्ट होता है, और विनेगर होता है। दैट मेक्स इट एसिडिक। मेरे वो तमाम पेशेंट जो कीटो पे होते हैं, आई टेल टेक दैट ड्रिंक विथ स्ट्रॉ से लेंगे तो वो दांत की अंदर की सरफेस पर टच नहीं होगा। वरना जो लोग 3-4 महीने तक रेगुलर कीटो करते हैं, उनके दांत की अंदर की पैलेटल सरफेसेस एरोड होना शुरू हो जाती हैं और वहाँ से प्रोटेक्टिव लेयर खराब होना शुरू हो जाती है। देयर इज़ अनदर डाइट, इट इज़ सम चाइनीज़ डाइट, टोमेटो बेस्ड डाइट। यू हैव टू कंज्यूम लॉट ऑफ टोमेटोज इन इट। उनमें हमेशा पेशेंट्स में ये सारी सरफेसेस एरोड हो जाती हैं, बिकॉज अगेन इट्स हैविंग एसिडिक जूसेस इन इट एंड लॉट ऑफ लेमन्स इन दैट डाइट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी डाइट में जो भी एसिडिक चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर ड्रिंक्स हैं, once you take it तो all the teeth are bad in it, तो it's better to take that with a straw ताकि दांत की surfaces damage नहीं हो। Carbohydrates we all know are favorite of bacterias, so anything that is carbohydrate plus acid is a sure shot for mold disaster. Can you name something that has carbohydrate and acids in it? Carbohydrates and acids. I can name things that have carbohydrates like rice, wheat. Yeah, but I don't know anything that has carbohydrates and calories. All Pepsis, all the Mirandas, all the 7-Ups, they have combination of both things. So those are most dangerous. It's better either take them with straw, limit their use, or altogether shun their use. Wow, this is so informative. Thank you so much. Now, does tea and a lot of caffeine also, somehow affect our teeth? Tea and caffeine have two type of effects. One thing, tea and caffeine, these are diuretics. Diuretics is anything जो आपके बॉडी से यूरिन में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को निकाल देता है, यानी ओवरऑल आपका पानी बॉडी से निकलता है यूरिन में। तो डायूरेटिक्स के बाद मुंह सूखा सूखा रहने लगता है जब आप टू मच कंज्यूम करते हैं। 2 to 3 cups is perfectly fine, but more than that, if you are getting that effect कि मुंह सूख रहा है, तो देन एक तो वाटर का इंटेक ज़्यादा करें और थोड़ा सा इसे लिमिट कर दें, क्योंकि जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि ड्राई माउथ के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। सेकेंड थिंग इज़ डिस्कलरेशन, बिकॉज पिगमेंट्स तो इनमें होते हैं जो दांत के ऊपर फिर डिपॉजिट हो जाते हैं और दांतों का अनसाइकली लुक आने लगता है। तो उसका वही हल है कि आधे घंटे के बाद अच्छी तरह से कुल्ली कर लें, रोज़ रात को टीथ ब्रश कर लें, एंड इफ़ नीडेड वंस इन अ ईयर आप अपनी स्केलिंग पॉलिशिंग करवा लें। Thank you so much, doctor, for this lovely information. Very valuable. And अब मैं चाहूँगा कि आपसे कुछ quick सवालात करूँ. I know we've reached our time limit, but this is very important that we, complete this segment properly. Okay, rapid fire round. Yeah, rapid fire round. I'm sure that you have seen my show, but this is not A.K Show. This is something else. Okay. Okay. So, does wheat and rice, between these both the things, I know that you are not a dietitian, but since you are talking about food intake and diets, I want to know what's best for us when it comes to carbohydrates and specifically wheat and rice. What's really good for us if we have to choose one between two of them? Wheat and rice, it depends. These are prepared in what form. If it is prepared in a form that is sticking to the tooth, the stickier it is, the dangerous it is. It's better to choose that it's prepared in a form that is not really sticky. Or if you have taken it, then you should clean your teeth soon after. Both the things, wheat and rice, they have their own benefits. So I will never recommend कि आप एक food group को बिल्कुल छोड़ दें. एक balanced diet के लिए everything is important. But what is important, wheat भी आपकी जितना यानी वो मैदा होगा वो उतना dangerous है जितना उसके अंदर रफेज और फाइबर होगा, it's better.
Same goes for rice. If you are consuming brown rice, those are excellent. लेकिन जितना ज़्यादा आप उसे धो के और मल के पकाएंगे तो उसके ऊपर से थायामीन चला जाता है और वो फिर आपके बॉडी में थायामीन और चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है. तो इट्स बेटर कि जितना नेचर से करीब है चीज़ उसको उतनी प्योरेस्ट फॉर्म में प्रिपेयर करने की कोशिश करें. Both wheat and rice, when we get them in form of cereals, they become very dangerous because in cereals they have added extra carbohydrates, they stick to the tooth surface and that become dangerous. But when you consume them in their pure form, they are excellent for health as well as for the teeth. Thank you so much. This is the last one. Honestly, I speak. How many calories should a healthy man have in a day? Thank you. This thing that how much calories we should consume, it's according to your basal metabolic rate. That differs with every person. That differs according to your build, your height, your weight, and your activity level. If you are someone couch potato kind of person sitting on the sofa watching television all the time, you don't really need that much calories. मगर athlete है, बहुत active है, भाग दौड़ रहा है, and especially the kids in your age who are active, who have very high metabolism, उनकी caloric needs कहीं ज़्यादा होती हैं. So basically we have to see everything to exactly calculate the caloric need of a person, rather than आप एक average दे सकते हो, एक bracket form में बता सकते हो, but ideal is to see the activity level, person, build, type, everything, and then फिर जो बहुत मोटे लोग हैं, if they have to reduce the weight तो उनको वो फिर 1000 कैलोरी पे फॉर एग्जांपल ले जाते हैं. तो it differs. It's a very vague question जिसको आंसर करने के लिए we need to see exactly कि हमें किसके लिए measure करना है, and then we can measure it accordingly. Thank you so much. Yeah, that was very well said. And क्योंकि ये इतना diverse topic है, अगर हम इस पे बात करने बैठ जाएं तो हम I think रात हो जाएगी, and we'll continuously talk about it. So inshallah, we will plan another session on this topic, because the more awareness we create, the more the need it requires. क्योंकि लोगों में curiosity पैदा हो जाती है, they want to know more about it, and it's good that they have concerns about their health, and some people don't even care about it at all. So we have nothing to do with it. It's good for them or it's bad for them. We have nothing to do with it. But if they want to take advantage, they can always reach out to Dr. Amara Latif from Smile Bright, and those who have like severe disease issues, those who are suffering a lot, they need rescue. They need medical and professional help. With that being said, ladies and gentlemen, please take care of your oral cavity, your teeth, your body, your diet, and everything. Thank you everyone for watching. I extend my warm thanks to Dr. Amara Latif from Smile Bright for taking the time out and giving us her time and sharing her valuable, really, I say it, valuable information with us. I'll always remain forever grateful to her for this. Thank you, viewers, for watching. And with that being said, ladies and gentlemen, you were watching E. Fatima Academy, and this was another exciting episode of Educatify with Ali Raza Khan. I will see you in the next one. Bye-bye.